Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope so all of you will be fine. Today we are going to start lecture number 2 of Theory of Groups. In this lecture we will discuss very important definition of group and its examples. There are 22 examples of groups given in this lecture series. So we will discuss some examples over here and some examples of groups in later lecture which will be used in all other coming lectures. So आपने लेक्चर को एहतियात से सुनना है, वीडियो कंप्लीट देखनी है और समझने की कोशिश करनी है. So we start with the definition of group. What is group? Let capital G be a non-empty set and steric be a binary operation on G, then capital G is called group if it satisfies the following conditions. What are these conditions? Dear students, अभी तक आपने ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप और मोनाइड पढ़ा है. ग्रुपाइड में आपके पास कुलैयर लॉ होना चाहिए. सेमी ग्रुप में कुलैयर लॉ के साथ साथ एसोसिएटिव लॉ भी होना चाहिए. मोनाइड में आपके पास 3 कंडीशन होनी चाहिए. कौन कौन सी? कुलैयर लॉ, एसोसिएटिव लॉ और आइडेंटिटी एलिमेंट. एंड फॉर बीइंग अ ग्रुप यू नीड 4 कंडीशंस विच आर कुलैयर लॉ, एसोसिएटिव लॉ और आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट होते हैं. So we discuss these 4 conditions one by one. Kulayar law: for all AB belonging to capital G, this implies A steric B belong to capital G. Associative law: for all ABC belonging to G, this implies A steric B within bracket steric C is equal to A steric within brackets B steric C होना चाहिए. And third one is identity element. There exists an element E belonging to capital G such that AE is equal to EA is equal to A. Fourth one is inverse element. For each A belong to capital G, there exists A inverse belong to capital G such that A steric A inverse is equal to A inverse steric A is equal to E होना चाहिए. मीन्स हर G के एलिमेंट के लिए G में ही एक ऐसा एलिमेंट पड़ा होना चाहिए जिसको उसके साथ अप्लाई किया जाए और आपके पास आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए. देन दैट एलिमेंट इज़ कॉल्ड इनवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर A belonging to capital G. So for being groups there are 4 conditions which are discussed in this lecture. Next we move toward examples of groups. As earlier I discussed that there are 22 examples of groups given in this series. So we start some example over here and some in the next lecture. So we start with Z plus set of integers under the operation of addition is group. क्यों? बिकॉज ये जो z प्लस है अंडर द एडिशन तमाम की तमाम ग्रुप होने की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. कुलैयर लॉ को भी, एसोसिएटिव लॉ को भी, आइडेंटिटी को भी और इनवर्स एलिमेंट को भी. तो यहाँ पर आइडेंटिटी जो है वो ज़ीरो है और इनवर्स जो है एडिटिव इनवर्स होगा क्योंकि अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन है. तो 2 का इनवर्स -2, 3 का -3, 4 का -4. सो z प्लस इज़ अ ग्रुप. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, q प्लस द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स q x सच दैट x इज इक्वल टू p बाई q एंड p q बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर ऑल q नॉट इक्वल टू 0 इज़ ए ग्रुप. के सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन आपको क्या देता है? एक आपके पास ग्रुप आता है. एग्जांपल नंबर 3 इज़ सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन.
The set of real numbers are q union q prime under the operation of addition is a group. Next we move toward example number 4, C plus. The set of complex numbers under the operation of complex addition is a group. The set of all those complex numbers whose modulo 1 or 1 is a group under multiplication. मॉडलो 1 के जितने भी आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हों, कम्प्लेक्स नंबर आ रहे हों, वो क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं. एग्जाम्पल 6, q माइनस ज़ीरो अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन के सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स q such that q is equal to p by q and pq not belong to z for all q is not equal to 0 under the operation of multiplication is a group. R minus 0 comma dot the set of non-zero यानी कि ज़ीरो के अलावा real numbers under the operation of multiplication form a group. Next example number 8 is C minus 0 set of complex numbers non-zero under the operation of complex multiplication is a group. The set Cn of all nth roots of unity for fixed positive integer n is a group under the operation of usual multiplication of complex numbers. Here general formula for elements is ck e raised to the power 2k pi over n है. तो वेयर k फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 तक आप पुट कर सकते हैं और n को अपनी मर्ज़ी से फिक्सअप कर दें, तो वहाँ से आपके पास जो है एलिमेंट्स आ जाएंगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी. नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स एग्जांपल नंबर 10, द सेट SA of all bijective mappings of a non-empty set A under the usual composition of mappings is a group. Then is Zn under the operation of addition is a group for any non-zero positive integer n. Zn क्या होगा, 0 1 2 3 n minus 1. Define addition in Zn as, कैसे डिफाइन की गई है, for all a b belong to Zn we have a plus b belong to R where a small r is the remainder obtained after dividing the ordinary sum of a and b by n. So these were the some examples. In next lecture we will start with example number 12. Thank you so much.